भाभी की बहन हो। Hello, Namaskar, Pranam, Salam, Sastriyakal, Hola, good afternoon, good evening, and a very hearty welcome, everyone, and warm greetings to all of you from Adyar. As you know, today's meet is a special one where there is no lecture, no talk that will be delivered. So, for a brief while, we keep our minds to rest and come together, feel that oneness, and enjoy that bliss of oneness. Not only that, we come together with our heart, which often we call in Hindi, since most of these devotional songs that you are going to hear are in Hindi, Sanskrit, Urdu, Malayalam, Bengali, Sindhi. So it is a coming together beyond languages, coming together with our hearts. And at the same time, this is also the offering of devotion, not only to those people who have passed away recently that we revered a lot, the theosophists, the many senior theosophists who passed away in the recent times. We wish for their smooth and peaceful journey. And also today is the Punya Tithi, that is the death anniversary of Mahatma Gandhi. So we will also have one of that devotional song in the end, which was very close to his heart. That is Raghupati Raghav Raja Ram, and everyone is invited to join that. Today we have a number of presentations, and we expect this program to last about an hour or so, depending. But when you know when it is from Dil Se, when it is from heart, we go beyond time. So we'll see how it goes. And also, if any one of you at any point of time feel inspired to share a song, a poetry, devotional, spiritual, uplifting, please feel free to either you can message us on WhatsApp, you can put it in the chat box of the Zoom meeting, or you can just raise your hand physically, or you can click on the raise hand icon and we will invite you to share your heart-to-heart words. And the rendering, the instrumental flute that you were just listening, there are a couple of more of them in the program, and we are very thankful to Brother Vishwajit Mohapatra, who is an IT professional who likes music and who play Indian flute that is called Bansuri, and he's a member of Prayas Theosophical Lodge. And we also know him as the father of Suhani Mohapatra, whom we all know performed during the international convention recently held. She performed a dance performance, and which everyone appreciated a lot. So without any further ado, let us first come together, and as we usually start our meetings with the universal prayer, we will start, and then we'll proceed with our usual program. Let us come together in heart and mind to invoke that universal immutable principle which is binding us all together. O hidden life, vibrant in every atom, O hidden light, shining in every creature, O hidden love, embracing all in oneness, may each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. And to begin with, as is the tradition, that the guru, the teacher, the master
is considered the highest principle, even beyond the Trinity. So we will all start with the Guru Vandana by Sister Vasumati Agnihotri, who is my mother also. And she belongs to a founder member of Pragya Lodge, and she lives in Lucknow, and singing is a passion for her. So okay, so we welcome Sister Vasumati Agnihotri. She is retired from Education Department in Uttar Pradesh. And as Shikar already pointed, she is the founder member of Pragya Lodge in Lucknow. Is a lecturer of the Federation of UP and UK. She currently lives in Lucknow, and singing is a passion for her, and she really conveys that devotion that is inside her heart through her song. So we are going to share the Guru Vadana in the beautiful voice of our dear Mommy Vasumati. ये संस्कृत में गुरु वंदना मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ये संस्कृत में गुरु वंदना मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानिमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वं स्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलम् अचलं सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः चैतन्यो शाश्वतो शान्तो व्योमातीतः निरञ्जनः बिन्दुनादकलातीतौ तस्मै श्रीगुरुवे नमः सर्वश्रुतिशिरोरत्नविराजितपदाम्बुजः वेदान्तम्बुजसूर्यो यो तस्मै श्रीगुरुवे नमः ज्ञानशक्तिसमारूढस्तत्त्वमाला विभूषितः भुक्तिमुक्तिप्रदाता च तस्मै श्रीगुरुवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः ध्यानमूलं गुरो मूर्तिपूजामूलं गुरो पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः कृपा मोक्षमूलं गुरुः कृपा। thank you, Sister Vasumati, for that wonderful Guru Vandana. And now we are going to have a very famous bhajan in Hindi, which was a surprise for me because it comes from Brother Zinu Master, whom I have the pleasure of meeting so many times, but didn't know that he had also this passion and talent for singing. And what a wonderful voice
he has Darshan Do Ghanshyam, which is a very famous devotional song in India that we know. Please enjoy it. दर्शन दो घनश्याम नाथ मोहे अखियाँ प्यासी रे दर्शन दो घनश्याम मन मंदिर की ज्योत जगा दो घट घट वासी रे दर्शन दो घनश्याम मंदिर मंदिर मूरत तेरी फिर भी न दिखे सूरत तेरी मंदिर मंदिर मूरत तेरी फिर भी न दिखे सूरत तेरी युग बीते ना आई मिलन की पूरन मासी रे दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे दर्शन दो घनश्याम द्वार दया का जब तू खोले पंचन सुर में दूगा बोले द्वार दया का जब तू खोले पंचम सुर में दूगा बोले अंधा देखे लंगड़ा चल कर पहुँचे काशी रे दर्शन दो घनश्याम नाथ मोहे अखियाँ प्यासी रे दर्शन दो घनश्याम पानी पी कर प्यास बुझाऊं नैनन को कैसे समझाऊं पानी पी कर प्यास बुझाऊं नैनन को कैसे समझाऊं आँख मिचोली छोड़ो अब तो मन के वासी रे दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरे अखी That was Brother Zinu Master sharing the devotional song about Lord Krishna that comes soon and give me your darshan, means vision or visualization or realization, so that my eyes, which are getting, which are so thirsty of your appearance, they will be relieved. So thank you, Brother Zinu Masterji. And now, moving on with our program of today, it's a pleasure to announce our sister, dear sister Jayashree Kannan, who most of us know for her participations in conventions in different scenarios. Sister Jayashree is a resident of TS Adyar, and she has worked for a long time in the Adyar Library. Presently, she is in charge of the archives department, and Sister Jayashree will share different songs along this program. We are going to begin with a Bengali folk song that she has sung in Bengali language. This is a Bengali folk song. Ditang ditang bole, model nitan tole, aaj ananda uchale, akash bora jochonai, ai chuta sakole, matir dhara tole, আজ হাসির কালারাত নতুন জীবন গড়িয়ায়
आय रे आय लगन बोए जाय में गुड गुड कारे चडशी मोनाय पारुल बुनका के चंप चुटे आय बोंगेर सब खा के कमर बेदे आय रे आय रे आय रे आय रे आय এ দিনাক না দিন দিনা বজরে প্রাণ বিনা আজ সবার মিলন বিনা এমন জীবন বিতা যায় এ দেশ তোমার আমার রগড়ি খামার আর রগড়ি স্বপন দিয়ে সোনার ক্ষমনায় আয় রে আয় লগন বয়ে যায় মে গুড গুড খারে চড়া সমনায় पारुल बुंदा के चंप चुटे आय बोगे शहा के कमर बेदे आय रे आय रे आय रे आय रे आय. That was Sister Jayashree in her usual serene voice, taking us into a different dimension, especially the Bengali language. If you hear, it's so sweet. And most of you might have heard about Brother Rabindranath Tagore, of what we also call Rabindra Sangeet. It is so sweet that some people just learn Bengali language to understand his music. So with that, we come to the next song, which is also from another very famous devotee, poetess, who belonged to a warrior family, but she fell in love with Krishna in childhood, and she considered Krishna her husband, I mean her beloved. And all of you may be knowing the name Mirabai, and her very famous song, a devotional song, which is an allegorical song. Let us not take it to a physical relation, but the relationship of individual soul to the universal soul. It says, Ghungat ke pat khol tohe piya milenge, means you remove the barrier. Ghungat is the veil that we wear, or we can call it as our personality. So the moment we remove that veil, we will find our Piya, the beloved, standing in front of us or within us. This is by Sister Vasumati Agnihotri. ये मीरा का बड़ा प्रसिद्ध भजन है कि घूंघट के पट खोल रे तुहे पिया मिलेंगे. कितने सादे लफ्जों में उन्होंने ये हमें बताया है कि इस रंग महल रूपी संसार में, एकांत में और अपने ध्यान में हम किस तरह उस प्रभु का, उस प्यारे प्रभु को हम अनुभव कर सकते हैं. ये इस पूरे भजन में उन्होंने बताया है. घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे. घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे. घूंघट के पट खोल रे. घट घट में तोरे साईं बसत है. घट घट में तोरे साईं बसत है. कटुक वचन मत बोल रे तोहे पिया मिलेंगे. कटुक वचन मत बोल रे तोहे पिया मिलेंगे. घूंघट के पट खोल रे. धन यौवन का गर्व न कीजे. धन यौवन का गर्व न कीजे. झूठा इसका मोल तोहे पिया मिलेंगे. झूठा इसका मोल रे तोहे पिया मिलेंगे. घूंघट के पट खोल रे.
देखिए यहाँ अवेयरनेस की बात कर रही है वो। जाग जतन से रंग महल में, जाग जतन से रंग महल में, पिया पायो अनमोल रे, तो हे पिया मिलेंगे, पिया पायो अनमोल रे, तो हे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे, सोने मंदिर दिया जला के, सोने मंदिर दिया जला के, आसन से मत डोल रे, तो हे पिया मिलेंगे, आसन से मत डोल रे, तो हे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे। घूंघट के पट खोल रे तो हे पिया मिलेंगे. And with awareness that we can arrive to that stage. That's what the essence of this devotional song is. We see Dr. Kamal Mohanot has raised her hand. We will invite you, Dr. Kamal Mohanot, later for sharing yourself. And we have Chandrika ji also, Taral Munshi ji also in the guest list. So please, whenever you feel free, comfortable, let us know. We'll request you to share your song. Yeah, and coming next, we have Kritika Goel. Kritika is a young member of the Indian Theosophical Society, member of the Prayas Lodge. She's a very, very active person. She works with young people, with children. She's a speaker, a moderator. And today she's going to share with us Achyutan Keshavan. Both Achyutan and Keshav are names for Krishna. So let's listen to Kritika. अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् कौन कहता है भगवान आते नहीं कौन कहता है भगवान आते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहता है भगवान खाते नहीं कौन कहता है भगवान खाते नहीं बेर शब्दी के जैसे खिलाते नहीं बेर शब्दी के जैसे खिलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहता है भगवान सोते नहीं कौन कहता है भगवान सोते नहीं माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहता है भगवान नाचते नहीं कौन कहता है भगवान नाचते नहीं गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं
अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं नाम जपते चलो काम करते चलो हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो याद आएगी उनको कभी ना कभी कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. That was Kritika Goyal in her sweet voice, and even if she had very cold, too much cough and cold, but still she managed to send us this video. And as many of us from India or abroad might be listening, that most of these devotional songs are inspired from either Lord Krishna, Lord Rama, and there are for other gods and goddesses also. But Lord Ram and Lord Krishna evokes a very strong sense of devotional feeling, and that's why maybe we have so many of them. And in the same light, there is a Sanskrit stotram, Sri Krishnashtakam, coming over next by Sister Vasumati Agnihotri. So let us listen to that also. हाँ, ये श्री कृष्णाष्टकम ये स्तोत्र है भगवान कृष्ण का, और इसमें इनका भाव ये है कि हे ब्रज भूमि के एकमात्र आभूषण, समस्त पापों को नष्ट करने वाले, अपने भक्तों के चित्तों को आनंदित करने वाले नंद नंदन को मैं सर्वदा भजता हूँ। उनके सौंदर्य व कृतित्व का पूरे स्तोत्र में वर्णन है, और अंत में प्रार्थना है कि हे प्रभु कृपा करो, जब जैसी परिस्थिति में रहूं मैं सदा आपकी सत्कथाओं का गान करूं। भजे ब्रजैकमण्डनं समस्त पाप खण्डनं स्वभक्त चित्त रंजनं सदैव नन्दनन्दनं सुपिच्छ गुच्छ मस्तकं सुनाद वेणुहस्तकं अनंग सागरं नमामि कृष्ण नागरं मनोज गर्वमोचनं विशाल लोल लोचनं विधूत गोप शोचनम नमामि पद्मलोचनम करारविंद भूधरम स्मितावलोक सुंदरम महेंद्र मान दारणम नमामि कृष्ण वारणम कदम्ब सून कुंडलम सुचारु गंड मंडलम ब्रजांगनैक वल्लभम नमामि कृष्ण दुर्लभम यशोदया समोदया सगोपया सनंदया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं दधानमुक्तमालकं नमामि नन्दबालकं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसं दृगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सलालसङ्गिनं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवम् गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरधीश्वनिकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीन गोपनागरं नवीन केलिलम्पटं नमामि मेघ सुन्दरं तडित् प्रभाल सत्पटं समस्त गोपनन्दनं हृदम्बुजैकमोदनं नमामि कुञ्ज मध्यगं प्रसन्न भानुशोभनं निकाम कामदायकं दृगन्त चारुसायकं रसाल वेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्ण सत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयतां प्रमाणिकाष्टकद्वयं जपत्यधीत्य यः पुमान्
भवेत्स नन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान्. As you can see, the melodiousness of that song in Sanskrit, the rhyming of Krishnashtakam. Yes, and next is Sister Jayashree, who will present a Malayalam song by her. And after Sister Jayashree, we will have also the pleasure to listen to Brother Taral Munshi, who will present live. So now we are going to present two short videos. In one of the videos, Sister Jayashree explain us about the meaning of the song. And after that one, we will share the song itself. The me Lokan Muruvan. To fill in this world which is filled with pain, O light of love, please lit yourself. You being a source of compassion, relieving pain, daunting everywhere, pave a way through this jungle of fear. When stuck in the world full of puzzles and experiments, when stuck in the battlefield with trials of swords, when drowning in the ocean of tears with bleeding hearts, as a support, as a blessed shadow, as a holy medicine, hold our hands in these tough times, dearest Lord, in grass, in flowers, in insects, birds, in wildlife, and in the forestry, Savior of the world, the one who poured droplets of life, incarnate as a ray of light in happiness to destroy this darkness. ലോകം മുഴുവൻ സുഖം പകരാനായി സ്നേഹദീപമേ മിഴി തുറക്കൂ. ലോകം മുഴുവൻ സുഖം പകരാനായി സ്നേഹദീപമേ മിഴി തുറക്കൂ. കദന നിവാരണ കനിവിന്നുറവേ കാട്ടിൻ നടുവിൽ വഴി തെളിക്കൂ. ലോകം മുഴുവൻ സുഖം പകരാനായി സ്നേഹദീപമേ മിഴി തുറക്കൂ. പരീക്ഷണത്തിൽ വാൽമുനയേറ്റി പടനിലത്തിൽ ഞങ്ങൾ വീഴുമ്പോൾ ഹൃദയക്ഷണത്യായി രക്തം ചിന്തി മിഴിനീർ പുഴലിൽ താഴുമ്പോൾ താങ്കായ് തണല ദിവ്യോഷധിയായി താതനാഥ കരം പിടിക്കൂ. ലോകം മുഴുവൻ സുഖം പകരാനായി സ്നേഹദീപമേ മിഴി തുറക്കൂ. പുല്ലിൽ പൂവിൽ പുഴുവിൽ കിളിയിൽ വനജീവനവിൽ വനചരണിൽ ജീവബിന്ദുവിൻ അമൃതം തൂക്കിയ ലോകപാലക ജഗദീശ ആനന്ദത്തിൽ അരുണകിരണമായന്ധകാരമിതിൽ അവതരിക്കൂ.
ലോകം മുഴുവൻ സുഖം പകരാനായി സ്നേഹദീപമേ മിഴി തുറക്കൂ. Thank you very much, Sister Jayshree. Always your voice conveys so many meaning beyond words, language, and frontiers. Thank you very much. And next we have a participation of our dear brother and sister Taral and Archana Munshi. Both of them are artists and they are members of Jyoti Lodge of Mumbai Theosophical Federation. They are not only very talented, but also very dedicated couple in the work of spreading theosophy. They have been organizing Trivedi meetings every Tuesday. That is a joint lodge of 3 lodges in 3 languages, English, Hindi, and Gujarati. And they always work tirelessly for the theosophy and for the art, spreading art and theosophy. So it's a pleasure for us to have them here today with this live presentation. Please, Sister Archana and Brother Taral, if you can yourself, we will enable the unmute. Just give us a second. Now you can unmute yourselves. Thank you so much. Thank you so much. Archana and me, मैं तो सिर्फ आपको सामने बताऊंगा कि वो क्या गाने जा रही हैं, but since we are in a meet where if we can join something with philosophy, this is a bhajan in Gujarati which is called राख ना रमकड़ा. Now राख ना रमकड़ा मतलब राख के खिलौने. अविनाश व्यास बहुत प्रसिद्ध संगीतकार हो गए हैं, बहुत प्रसिद्ध लेखक हो गए गुजराती में. यूं समझ लीजिए कि हिंदी के 5-7 बड़े-बड़े नाम जोड़ लीजिए और वो मिलाकर भी अविनाश व्यास नहीं बन सकते. तो इस गाने में, इस भजन में उन्होंने ये बताया कि हम सब राख के बनाए हुए खिलौने हैं, जो राख से बनते हैं, घर बनाते हैं, समाज बनाते हैं, अपने आप का सृजन करते हैं और फिर एक नीति का झोंका आता है और सब कुछ मिट्टी में तब्दील और राख में तब्दील करके चला जाता है. लेकिन ये यहाँ रुकती नहीं है, ये चीज वापस घूम फिर करके वापस आती है और राख के खिलौने, राम के खिलौने राख के ही रहते हैं. ओवर टू अर्चना इस भजन के साथ. आइए. राखना रमाकड़ा मारा रामे रमता राख्या रे, मृत्यु लोकनी माटी माटी मानव कईने भाग्या रे. राखना रमाकड़ा बोले डोले रोज रमकड़ा, नित नित रमत्यूं मांडे. बोले डोले रोज रमकड़ा, नित नित रमत्यूं मांडे. आमारू आतारू कहीने एक बिजाने भांडे रे. राखना रमाकड़ा मारा रामे रमता राख्या रे. राखनी माटी माटी मानव कईने भाग्या रे. राखना रमाकड़ा काची माटीनी काया माथे माया केरा रंग लगाया. ढिंगला ढिंगलिए घर मांड्या त्या, ढिंगला ढिंगलिए घर मांड्या त्या, विंझणला विंझाया रे. राखना रमकड़ा मारा रामे रमता राख्या रे, मृत्यु लोकनी माटी माटी मानव कईने भाग्या रे. राखना रमकड़ा अंत तनंतन तंतन टूटन रमत अधूरी रही. अंत अनंतन तंतन टूटन रमत अधूरी रही. तनडाने मनडानी वातो आवी एवी गई. राखना रमकड़ा मारा रामे रमता राख्या रे, मृत्यु लोकनी माटी
रमणार मोकळा. Thank you so much, Archana ji, Taral ji, and though for those of you who wants to the meaning, that the symbolism is that all of us are the toys made up of ash in the night, and when we make so much of castles and big things, surround ourselves with so many things, but wind comes and then it takes it away along with it everything, and all our illusions are shattered. So the only point that remains is to remember that Lord Ram, Lord Krishna, or divinity, whatever name you want to give it. Correct, correct. Thank you so much, Archana ji, Taral ji. We'll have you again soon. And now Next is Auntie Prabha Dikshit. She is from the Theosophical Society Allahabad, and she is also our auntie. The song she is going to share with us is a devotional song dedicated to Krishna, and it keeps repeating the different names of Krishna. That this repetition takes us beyond, uplifts us and takes us to the superior. She will make a small explanation in Hindi first, which Shikar is going to translate once she finishes. So let's hear Prabha Dikshit auntie. जीवन की अवधि थोड़ी है, इसलिए राधे श्याम की रचना में मन लगाओ। पहले इसमें 3 स्टैंजे हैं। पहले का तात्पर्य है सांसारिक कामनाओं की पूर्ति करने में ही जीवन की अवधि पूरी होती जा रही है। अब जागो और इस अल्प अवधि में ही ईश्वर के नाम के सहारे वासनाओं पर विजय पाने के लिए उठ खड़े हो। दूसरा स्टैंजा है आयु रात दिन कम होती जा रही है, पर आशा तृष्णा बढ़ती जा रही प्रतीत हो रही है। ऐसे में संसार से दूर हटकर प्रभु भजन में मन को लगाना है। तीसरा स्टैंजा है झूठे जग में मन को हम भरमा रहे हैं। यह माया का संसार है, यहाँ कुछ भी मिलना नहीं है। माया के आकर्षण में पड़कर हीरा जैसा जन्म व्यर्थ बीतता जा रहा है। अतः हे जीव, तू परमात्मा कृष्ण के चरणों की शरण ले। अब भजन है। राधे श्याम रटो उमरिया थोड़ी है, राधे श्याम रटो उमरिया थोड़ी है। नाव भंवर में फंसती जावे, रात भयानक चढ़ती जावे। नाव भंवर में फंसती जावे, रात भयानक चढ़ती जावे। निंदिया छोड़ उठो उमरिया थोड़ी है, राधे श्याम रटो उमरिया थोड़ी है। आयु रात दिन घटती जावे, आशा तृष्णा बढ़ती जावे। जग से दूर हटो उमरिया थोड़ी है, राधे श्याम रटो उमरिया थोड़ी है। झूठे जग में मन भरमावे, हीरा जैसा जन्म गवावे। कृष्ण चरण पग डोल उमरिया थोड़ी है, राधे श्याम रटो उमरिया थोड़ी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. That is considered one of the Maha Mantras that is chanted all over India by various traditions. Thank you, Mausi, Prabha Mausi, for your sweet voice and sharing with us this
song that our life is passing and we are busy in so many petty little things. Let us concentrate on what is really the truth that goes beyond our life and death. And coming next, we have again the flute of Brother Vishwajit Mohapatra, who is an IT professional and he likes music and he plays Indian flute or bansuri, which is the name. He is a member of Pragya's Theosophical Lodge. So okay. He's going to play for us, all of us, in his beautiful way, melodious way, a very famous devotional song, Om Jai Jagadish Hare. Just sit back, relax, and really, when you listen to it, just no words, please.
Om Jai Jagdish Hare. I think it's a very common bhajan or archana that we find in Indian household here. And now we have with us Sister Vibha Saxena. We request Sister Vibha Saxena to unmute herself, and we all know her as a very fluent theosophical speaker. She's a national speaker of the Indian section, and with her, the depth of her knowledge and understanding, and even simpler way of sharing with everyone, makes it a delight for everyone to listen. And today we are seeing her in a new avatar, and she is going to recite or share with us some of the couplets of the famous philosopher, poet, self-realized poet Kabir, whom we all know about. And after that, we will request Dr. Kamal Mohanot to be ready, and we will be inviting her for singing. So, Sister Vibha Saxena, over to you. Thank you, Shikharji, and Shikhar and Catalina, both of you, for organizing this wonderful evening. And all the songs, all the presentations are so inspirational that I could not stop myself from presenting these, as they are called, dohe, Kabir ke dohe. Although Kabir Das ji, he lived during the 15th century, but the dohe that he has written, they are so relevant even today. तो मैं एक पंक्ति में इसका अर्थ बता के फिर दोहा कहूंगी। जिस प्रकार कुम्हार घड़ा बनाने के लिए मिट्टी को अपने पैरों से मलता है, तब मिट्टी उससे कहती है कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुम्हें मलूंगी, यानी कि ये शरीर नश्वर है। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंदूंगी तो है। अमीर गरीब, राजा फकीर, जो भी आया है एक दिन जाएगा। आए हैं तो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। कमजोर इंसान को कभी न सताइए, उसकी हाय बहुत ही हानिकारक है। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मुई खाल की सांस सो लौह भस्म होई जाए। यह संसार द्वैत भाव रूप से व्याप्त है, यानी अमीर गरीब, पाप पुण्य, सुख दुख, यही चक्की के दो पार्ट हैं जिनके बीच संसार में हर कोई पिसता है। मुक्ति का मार्ग भक्ति। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में बाकी बचा न कोई। दुख में हर कोई ईश्वर को याद करता है, यदि सुख में याद करता तो दुखी ना होता। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। यह जीवन पेड़ पे लगे पत्ते के समान है, आज हम मिले हैं, कल पवन हमें कहाँ उड़ा ले जाए। पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिलेंगे, दूर पड़ेंगे जाए। एक बार फिर। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो है। नमस्ते।
Thank you so much, Sister Vibha. And we all know that how much deep philosophy these couplets of Kabir have, and in such a sweet voice you have shared, uplifting us all. Thank you so much. And now we request Dr. Kamal Mohnot ji, who is ready, and most of you might be knowing Kamal Mohnot ji belongs to Rajasthan and very active in TS and TOS work, and ever ready to share her thoughts, her feedbacks. And now today again we are seeing her sharing a devotional song. Welcome, Dr. Kamal Mohnot ji. Over to you, please. मैं आपके समक्ष एक बापू का प्रिय भजन प्रस्तुत कर रही हूँ, क्योंकि आज 30 जनवरी भी है, उनके बलिदान दिवस पर वैसे हम लोग करते हैं प्रार्थना बहुत सारी, परंतु ये एक प्रिय भजन उनका ये भी है, तो ये क्यों कर देती हूँ। तो मैंने सोचा यही बोल दूंगी, हालांकि मैं कोई गाती नहीं हूँ, पर मेरी इच्छा हुई तो मैंने कहा के बोल देती हूँ। हरि तुम्हारो जन की भी, हरि तुम्हारो जन की वीर, द्रौपदी की लाज राखी, तुम बड़ायो चीर, द्रौपदी की लाज राखी, तुम बड़ायो चीर, भक्त कारण रूप नरहरि, दरियो आप शरीर, भक्त कारण रूप नरहरि, दरियो आप शरीर, हिरण्याकश्यप मार लीनो, हिरण्याकश्यप मार लीनो, दरियो नाही नदी, हरि तुम्हारो जन की पीर, जन की वीर, डूबतो गजराज राख्यो, डूबतो गजराज राख्यो, कियो बाहर नीर, हरि तुम्हारो जन की पीर, दासी मीरा लाल गिरधर, दासी मीरा लाल गिरधर, गिरधर दुख जहाँ तहाँ पीर, हरि तुम्हारो जन की पीर, हरि तुम्हारो जन की पीर। आपके लिए एक बात बताना चाहती हूँ कि ये भजन मीरा ने तब लिखा था जब किसी ने उनको एक लाके एक व्यक्ति को रख दिया कि भाई इसको सांप काट गया है और किस तरह इसको बचाना है, किस तरह इसका विष कम करें, तो आप कर सकती हैं। अब वो कर कैसे सकती हैं, तो उसने कहा मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती, मेरा तो सांवरिया ही करता है। तो फिर उस समय उसने हरि तुम्हारो जन की पीर ये गीत गाया था। Thank you so much, Dr. Kamal ji. And this is the real feeling that you said you don't know how to sing, but still you wanted to share this song. We are so thankful to you for coming out and sharing this with us with such a deep message, asking the Lord to remove the suffering of the world and helping their devotees and followers. Thank you so much, Dr. Kamal. Thank you. Thank you, Dr. Kamal. And coming next, we have a couple of mother and daughter, Subralina and Pranshi Mohanty from Ghaziabad, Pragyas Lodge. They are both very engaged members of Theosophical Society. Subralina makes a wonderful job with the children in Pragyas Club, children all around India and other countries where some children join the meetings. And Pranshi, her daughter, she's also a very talented girl. She has a YouTube channel where she shares all her music and arts. And today they are going to play for us another hymn to Krishna in another one of the names of Krishna, that is Damodar. It's called Damodar Stotram. Stotram means hymn. So let's listen to Pranshi and Subralina Mohanty. करारविंदेन फलारविंद
मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिब स्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति विक्रेतु कामा नीलगोपकन्या मुरारी पादर्पितचित्तवृत्ति दह्यादिकं मोहवशादवोच गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गृहे गृहे गोपवधूकदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगं पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति सुखं शयानं निलयिनि जेपि नामानि विष्णु प्रवदन्ति मर्त्या ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तार्थविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव गेयं देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति. Thank you, Subralina ji and Pranshi, for such a wonderful and musical rendition of Damodar Stotram. Yeah, same to you there. Very nice. And that's really inspired mother-daughter duo. And now we have one person whom I was trying to get for so long, but she was not available due to some reason. But finally, we got the honor and pleasure of having her with us, Chandrika Mehta ji, who has conducted the devotional meeting during the convention, international convention in Adyar. And fortunately, we have her at present here with us, and she'll be sharing with us. Although we are running over some time, but I don't think we care anymore for time. We can go a little more further. So please feel free. Thank you. Thank you so much, Shikha and Catalina. I'll be sharing a Kannada folk song. It's in praise of the deer, that is the forest, the greenery, and all that. So you enjoy the rhythmic song in Kannada language. ಅರಣ್ಯ ಅಡವ್ಯಾಗ ಮರಗಳ ಅಡಿಯಾಗ ತಣ್ಣನೆ ಗಾಳಿಯು ಬೀಸಿದಾಂಗ ಜಿಂಕೆಯು ಬಂದೇತ್ತ ಅಜಿಗಿಯುತ ಜಿಂಕೆಯು ಬಂದೇತ್ತ ಜಿಂಜಿನಕ ಕನಕ ಜಿಂಜಿನಕ ಕನಕ ಜಿಂಜಿನಕ ಕನಕ ಜಿಂಜಿನಕ ಹೂವು ಬಾಡದಂಗ ಲಲ 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 ಹುಲ್ಲು ಬಾಡದಂಗ ಲಲ 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 ಹೂವು ಬಾಡದಂಗ ಹುಲ್ಲು ಬಾಡದಂಗ ಜಿಂಕೆಯು ಬಂದಿತ್ತ ಗಿಡ ಮರ ಬಳ್ಳಿಯ ಕಂಪನು ಕಂಡು ತೂಗಿ ಬಾಗೇತ ಅಜಿಂಕೆಯು ತೂಗಿ ಬಾಗೇತ
ಜಿಂಜಿನಕ ಕನಕ ಜಿಂಜಿನಕ ಕನಕ ಜಿಂಜಿನಕ ಕನಕ ಜಿಂಜಿನಕ ಅರಣ್ಯ ಅಡವ್ಯಾಗ ಮರಗಳ ಅಡಿಯಾಗ ತಣ್ಣನೆ ಗಾಳಿಯು ಬೀಸಿದಂಗ ಜಿಂಕೆಯು ಬಂದೆತ್ತ ಅಜಿಗಿಯುತ ಜಿಂಕೆಯು ಬಂದೆತ್ತ ಜಿಂಜಿನಕ ಕನಕ ಜಿಂಜಿನಕ ಕನಕ ಜಿಂಜಿನಕ ಕನಕ ಜಿಂಜಿನಕ ಹಳ್ಳದಿ ನೀರಿನ ಜುಡು ಜುಡು ನಾದವ ಜಿಂಕೆಯು ಕೇಳಿತ್ತ ಹಳ್ಳದಿ ನೀರಿನ ಜುಡು ಜುಡು ನಾದವ ಜಿಂಕೆಯು ಕೇಳಿತ್ತ ಕೂಹು ಕೂಹು ಎನ್ನುತ್ತ ಕೋಗಿಲೆ ಇಂಪಾಗಿ ಹಾಡೇತ್ತ ಕೂಹು ಕೂಹು ಎನ್ನುತ್ತ ಕೋಗಿಲೆ ಇಂಪಾಗಿ ಹಾಡೇತ್ತ ಕೋಗಿಲೆ ಕಂಠದ ಇಂಪನು ಉಂಡು ಮನದಿ ನಲಿದೆತ್ತ ಅಜಿಂಕೆಯು ಮನದಿ ನಲಿದೆತ್ತ ಜಿಂಜಿನಕ ಕನಕ ಜಿಂಜಿನಕ ಕನಕ ಜಿಂಜಿನಕ ಕನಕ ಜಿಂಜಿನಕ ಅರಣ್ಯ ಅಡವ್ಯಾಗ ಮರಗಳ ಅಡಿಯಾಗ ತಣ್ಣನೆ ಗಾಳಿಯು ಬೀಸಿದಂಗ ಜಿಂಕೆಯು ಬಂದೆತ್ತ ಅಜಿಗಿಯುತ ಜಿಂಕೆಯು ಬಂದೆತ್ತ ಜಿಂಜಿನಕ ಕನಕ 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 ಜಿಂಜಿನಕ. Thank you so much. Thank you so much, Sister Chandrika ji. It was really almost many of us were moving almost our body and hands in the tune that you shared. And we all know Thank you so much. During Adiyar convention in the night, we used to sit together and sing a lot of songs, which is another way of strengthening the brotherhood. Thank you so much, Chandrika ji, for taking. Thank you so much for giving me an opportunity. And One more Shivoham, please. Yes, we will have who is that? Chandrika ji. Sandhya. Sandhya. Okay, Sandhya ji. Okay, she has left, but if we have time, we'll have quickly. And Dr. Sushma Srivastav is also waiting. Dr. Sushma ji, we will call you soon. Just requesting now Taral ji to give her, he wanted to share quickly something. Taral ji. हेलो, किसी कारण से मेरा ये ऑन नहीं हो पा रहा, तो मैं ऐसे ही गा सकती हूँ? हाँ गाइए. हाँ, आप ऐसे ही गा लीजिए आंटी. Okay, you can guide, you can sing. हेलो, हाँ सुषमा जी, you can sing. You can sing. वैसे तो संगीत में स्वर, लय और ताल की त्रिवेणी होती है, और लेकिन जब भक्ति संगीत होता है तो कुछ भाव भी उसमें जो है महत्व रखते हैं. बस सुनते सुनते मन में भाव जगा, तो इसलिए मुझे यदि अनुमति हो तो मैं गाऊं. हाँ जी, please. Yes, go ahead. Switch on your video, please. मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपको आवाज आ रही है आंटी? नहीं, कम आ रही है आवाज. आप गाइए, आपकी आवाज आ रही है. अच्छा, ओके. जी. ना मैं धन चाहूं ना रतन चाहूं, ना मैं धन चाहूं ना रतन चाहूं, तेरे चरणों की धूल मिल जाए तो मैं तर जाऊं, श्याम तर जाऊं, राम तर जाऊं. मोह मन मोह लोभ ललचाए, मोह मन मोह लोभ ललचाए, कैसे कैसे ये नाग लहराए, कैसे कैसे ये नाग लहराए. इससे पहले के दिल उधर जाए, मैं तो मर जाऊं, श्याम मर जाऊं, राम मर जाऊं, ना मैं धन चाहूं. थम गया पानी जम गई काई, थम गया पानी जम गई काई, बहती नदियां ही साफ
कहलाई, बहती नदियाँ ही साफ कहलाई, मेरे दिल ने ही जाल फैलाए, मैं किधर जाऊं, अब किधर जाऊं, मैं किधर जाऊं, अब किधर जाऊं, ना मैं धन चाहूं, ना रतन चाहूं, तेरे चरणों की धूल मिल जाए तो मैं तर जाऊं, शाम तर जाऊं, हे राम तर जाऊं, शाम तर जाऊं, राम तर जाऊं. Thank you so much, Dr. Sushma ji, for such a inspiring and soulful song to share with us. Thank you so much. And now, Taral ji, please, yes, you wanted to share something quickly, please. जी, बहुत क्विकली, बिल्कुल. हम लोग जो कहने जा रहे हैं, गाने नहीं जा रहे हैं, वो एक बहुत सुंदर गुजराती कुछ लाइनें हैं कि जीना सिखाएं. मतलब जो भी रचयिता है हमारा, हम भगवान बोले, मास्टर्स बोले, उनसे एक निवेदन है कि जीना सिखाएं. और ये कुंदनिका कापड़िया गुजराती लेखिका है, उन्होंने बहुत खूबसूरत लिखा है. तो अर्चना जी गुजराती में बोलेंगी और मैं हिंदी में, और लेटर ऑन 4-5 लाइनों में शिखर जी उसका इंग्लिश में मतलब बता सकते हैं. ओवर टू यू अर्चना जी. हे प्रभु, संजोगो विकट होय त्यारे सुंदर केम जीवવું તે મને શીખવ. हे भगवान, जब हालात खराब हो तो मुझे खूबसूरती से जीना सिखाएं. પરિસ્થિતિ ગુસ્સો પ્રેરિત તેવી હોય ત્યારે શાંતિ કેમ રાખવી તે મને શીખવ. मुझे सिखाएं कि जब परिस्थिति क्रोधित हो तो शांति कैसे रखें. બધી બાબતો અવળી પડતી હોય ત્યારે હાસ્ય અને આનંદ કેમ ન ગુમાવવા તે મને શીખવ. मुझे सिखाएं कि जब सब कुछ विफल हो जाए तो कैसे हंसी और खुशी न खो दी जाए. કઠોર ટીકા અને નિંદાનો વરસાદ વરસે ત્યારે ખપનું ગ્રહણ કેમ કરી લેવું તે મને શીખવ. कठोर आलोचना की बारिश होने पर मुझे उस आलोचना का उपभोग कर गले लगाना सिखाएं. પ્રલોભનો, પ્રશંસા, ખુશામતની વચ્ચે તટસ્થ કેમ રહેવું તે મને શીખવ. मुझे प्रशंसा, तारीफों के बीच तटस्थ रहना सिखाएं. ચારે બાજુથી મુશ્કેલીઓ ઘેરી વળે, શ્રદ્ધા ડગુમગુ થઈ જાય, મન નિરાશાની ગતિમાં ડૂબી જાય, ત્યારે ધૈર્ય અને શાંતિથી તારી કૃપાની પ્રતીક્ષા કેમ કરવી તે મને શીખવ. अंतिम पंक्तियां हैं. जब मुश्किलें मुझे घेर लेती हैं, जब विश्वास डगमगा जाता है, जब मन निराशा में डूब जाता है, मुझे सिखाएं हे भगवान कि आपकी कृपा की धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कैसे करें. धन्यवाद. Thank you so much, Archana ji, Taral ji, for inspiring lines with the essence of which is, please, oh Supreme, please teach us how to face the difficult times in our life. When any challenges or obstacles come in our life, teach us how to respond rather than react with wisdom, compassion, and love. Thank you so much. Always, Taral ji, and Archana ji, to listen to you. We'll have a next presentation, one more from Brother Zinu Master ji, and then Sudeep Kumar Mishra ji raised a hand. Sudeep Kumar Mishra ji, please be ready. After this, you will be sharing. That is Zinu Master ji in a small English song. Abide with me, fast falls the eventide, the darkness deepens, Lord, with me abide. When other helpers fail and comforts flee, help of the helpless, oh, abide with me. Swift to its close draws out life's little day, earth's joys grow dim, its glories pass away. Change and decay in all around I see. O thou who changes not, abide with me.
Thank you, brother Sinu Masterji. Your voice is so touching that it really touches the soul, and really it leaves its impression. And now we are almost coming to the end of the program. We'll have one Urdu ghazal, and followed by the flute of Vishwajit ji, and then Raghupati Raghav. But before that, Brother Sudeep Kumar Mishra ji, you want to add something? Yes, चार पंक्तियों की शायरी कहूंगा. Yes, please. तेरी रहमतों का उम्मीदवार आया हूँ, मुंह ढापे कफन से शर्मसार आया हूँ, आने न दिया बारे गुनाह ने पैदल, ताबूत पे कंधे पे होके साया सवार आया हूँ. Thank you all. वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. What I mean, the philosophy that Brother Sudeep Kumar Mishra has shared, very deep philosophy in just 4 lines, and that's the beauty of also the Urdu language. That really, it's a rubai which tells us that how to live the life fully. And in this, the same continuation, let us hear one Urdu nazm belonging the relation to, it's from Firak Gorakhpuri, from Sister Vasumati Agnihotri. Let's listen to it and see. फिराक गोरखपुरी की एक नज्म है जो रूहानी है और खुदा से मुतल्लिक है, और इसमें बड़े दार्शनिक सत्यों को अशार में कह दिया गया है. वो प्रस्तुत है. माना मेरी हर एक बात, कोई भी होश की नहीं. माना मेरी हर एक बात, कोई भी होश की नहीं. आपको भूल जाऊं मैं, ऐसी भी बेखुदी नहीं. आपको भूल जाऊं मैं, ऐसी भी बेखुदी नहीं. माना मेरी हर एक बात, जब्त को जब्त करके छोड़, इश्क से देख मुँह ना मोड़. जब्त को जब्त करके छोड़, इश्क से देख मुँह ना मोड़. जहर मिले जहर भी पी, इश्क है दिल लगी नहीं. माना मेरी हर एक बात, तेरे करम पे बेनियाज कौन सी शय मिली नहीं. तेरे करम पे बेनियाज कौन सी शय मिली नहीं. झोली ही अपनी तंग थी, तेरे यहाँ कमी नहीं. झोली अपनी तंग थी, तेरे यहाँ कमी नहीं. माना मेरी हर एक बात, जिसका इलाज हो सके वो मर्ज मर्ज ही नहीं. जिसका इलाज हो सके वो मर्ज मर्ज ही नहीं. जिसमें सुकून नसीब हो वो जिंदगी जिंदगी नहीं. माना मेरी हर एक बात, रो रो के कोई कब तलक
यूं जिंदगी बसर करे, रो रो के कोई कब तलक यूं जिंदगी बसर करे, तेरे करम में ए फिराक मौत भी बदी नहीं, माना मेरी हर एक बात कोई भी होश की नहीं, आपको भूल जाऊं मैं ऐसी भी बेखुदी नहीं, माना मेरी हर एक बात। माना मेरी हर एक बात कोई भी होश की नहीं. That's what people feel when they connect themselves to the higher self, to the divine. So if we have that connection all the time, no matter what comes in life, we will face it. Although I said it was the last, but we are proceeding towards the end. But this is the last sharing by Brother Gyanesh Chaturvedi ji, whom I cannot miss, who is here between us. Gyanesh ji, could you please? Yes. Yes, you are on, and I don't think you kindly start your video, please. Acha, so sorry. Yeah. Yes. Me and my wife both are joining. हम दोनों Yes. हैं, and we are singing this Rudrashtak. Okay, please go ahead. Yeah. नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं निरालं कहाँ काल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गंभीरं मनोभूतिकोटि प्रभाश्री शरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसब्दाद बालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि. Thank you, my dear. Thank you so much, Ganesh-ji, auntie. Those who don't know, they belong to a very famous city of Agra in India, where we have the Taj Mahal and the Nirvan Lodge in Agra, very famous and old lodge. Thank you so much for this beautiful rendition, Ganesh-ji. And now we are coming towards the end of our program. And remembering again Lord Rama through instrumental flute music of again Brother Vishwajit Mohapatra, who is going to play for us Sri Ramachandra Kripalu Bhajman, followed by Raghupati Raghav Raja Ram with Sister Jayashri, in which everybody can join. So please.
Thank you, Vishwajit ji. Now we are going for the ending with Raghupati Raghav Rajaram. All of you are invited to unmute and join with Jayashri ji in this very wonderful devotional song, favorite of Mahatma Gandhi. रामधुन रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे तो सीताराम 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 भज प्यारे तो सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम राम जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम सीताराम राजा राम सीताराम राजा राम Thank you, Sister Jayashri. And okay, it's really great to hear your voice always. And we want to thank to all our brothers and sisters from India and different corners of the world for your lovely presence today. It was a really very special gathering in which our souls and hearts and spirits are full of spiritual food for the rest of the week. And we of course want to especially thanks to all the talented people that contributed to this program: Sister Jayashri Kanan, Sister Basumati Agnihotri, Brother Sinu Master, Brother Vishwajit Mohapatra, Sister Suralina Mohanty and Pranshi, Sister Pravanti Dikshit, Sister Kritika Goel, Sister Kamal Monhod, Brother and Sister Taral and Archana Munshi, Sister Shuma Srivastava,
Sister Chandrika Mehta, Brother Sudeep Kumar Mishra, and Brother and Sister Chaturvedi from Agra. So to all of them, thank you for sharing your talent. Thank you for sharing your devotion. And thanks for giving us this uplifting moment, which we will carry along the upcoming days. And with this, we are coming to the end of our program. But before saying goodbye to all of you, we want to share the program that we have prepared for the second Sunday of February. Next Sunday, which is 6th February, we won't have program. So you all will get prepared for the special program that we are going to share on 13th February, in which we have the special presence of our dear President Tim Boyd. We are going to share a cup of theosophy with the President. It will be a session of questions and answers. So during 1 hour, we will have the opportunity and the privilege to share with our dear brother Tim questions, and he will be answering. We will hope to have a very interactive session with him, sharing all of us a cup of tea with him. So please get your cup of tea ready and join us on 13th February to enjoy this moment together. And if you have any questions, kindly send them to us before through our email or through our WhatsApp, so we can take them up in advance. And because that during that time it will be very limited time, so we'll make the most valuable questions. Okay. Thank you all. Thank you once again for joining and making this session such vital, with your presence, with your good wishes, and all the contributors who really made this session uplifting. Have a health, happiness, and harmony. Stay safe and love. Enjoy. शिखर जी एक शेर कहना चाहते Thank you very much. Now we are stopping our live in YouTube, and then we will stop sharing the screens. If anybody wants to say anything, they can share with us. Thank you very एक much. शेर कहना चाहती हूँ शिखर जी। जी, please. जहाँ खुलूसो